Hello, good evening, all of you. So let us start with the next topic in this chapter, oscillation. तो ऑसिलेशन के अंदर हमने लास्ट टाइम जो है सिंपल पेंडुलम जो होता है तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज और उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखा था और ये देखा था कि वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। उसी का कंटिन्यूएशन हम आज करने वाले हैं। सो लेट अस सी द कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम थिंग व्हाट वी हैव डिस्कस्ड लास्ट टाइम। यस, so here we can discuss about simple pendulum. So simple pendulum के बारे में हमने ये तो देखा था कि उसका जो फॉर्मूला है, the formula for period of the simple pendulum is given by 2 pi root L by G. Yes. अभी इसमें होता क्या है ना कि जैसे कल भी बताया था कि अगर लेंथ जो है वो अगर k टाइम्स बनता है, if length becomes k times L, then the period of simple pendulum will becomes root k times of the original one. That means जितने times length बनेगा तो उसका root k times जो है वो period बनेगा। तो ये हमको अच्छी तरह समझना है। And if we talk about the percentages, then if L increases by suppose p%, then T will increase by half p%. ये भी हमको समझना है। half p कहाँ से आया? Why this half p? Because this L raised to half is already there. रूट मतलब क्या होता है यहाँ पे? raised to half होता है, इसीलिए यहाँ पे raised to half होता है। इससे भी आगे जाके एक कंसेप्ट आता है, तुमको पता होगा, it's called as a seconds pendulum. You must have been heard about it. Seconds pendulum. What do you mean by this seconds pendulum? जिसका पीरियड 2 seconds हुआ करता है. Okay, so the period of seconds pendulum is specially 2 seconds. So if we fix the period, its length also becomes fixed, and we can find out the length of the seconds pendulum on the Earth's surface to be simply by putting t equal to 2 in this formula here. तो अगर यहाँ पे हमने t के बदले 2 डाल दिया तो हमको मिलेगा 2 is equal to 2 pi root L upon G. So that this 2 gets cancelled, and if we square both sides, then 1 का square बनता है 1, and here pi का square, that means pi square L upon G, from which we can find out this L here. If you try to find it out, then this L becomes actually G by pi square, which means that this is the length of seconds pendulum. We can denote it by LS actually. So this is the formula for finding the length of seconds pendulum. Remember, it depends on the gravity. Remember, pi is the constant already, but it depends on gravity also. That means the length of seconds pendulum on the Earth's surface will be different. The length of second pendulum on the surface of the another planet like Jupiter or Moon will be different. And obviously, whatever is the factor affecting this G will affect the length of seconds pendulum, obviously. So ये हमको अच्छी तरह समझना है। और इवन अगर समझते हैं कि सेकेंड्स पेंडुलम का जो लेंथ है तो वो लेंथ अर्थ के सरफेस पे कितना होता है, सो इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 मीटर, बिकॉज g and pi square just gets cancelled because their numericals value are same. g का वैल्यू हुआ करता है 9.8 और pi square का वैल्यू अगर देखो ठीक से तो वो बनता है 9.86. There is a very small difference between these two, and hence if we take the ratio, then almost we can get it as 1 meter. It is actually अगर देखेंगे तो 0.98 मीटर के आसपास वो कुछ आता है, ठीक है, but we can just consider it as 1 meter on the surface of Earth only. Remember that the seconds pendulum will work as a seconds pendulum on Earth only. अगर उसको हम किसी दूसरे planet पे लेके जाएंगे, just like Moon, so it will not be a seconds pendulum in that case there. वहां पे वो सेकेंड्स पेंडुलम नहीं रहेगा क्योंकि उसका पीरियड बदल जाएगा। पीरियड ही बदल गया तो वो सेकेंड्स पेंडुलम कहाँ से होगा? बिल्कुल नहीं होगा। सो द सेकेंड्स पेंडुलम जो है वो लेंथ उसका जो है g अपॉन पाई स्क्वायर, ये सिर्फ अर्थ पे हुआ करता है। अगर हमको मून पे उसको सेकेंड्स पेंडुलम बनाना है तो उसके लिए मून का ग्रेविटी यूज करना पड़ेगा, ये भूलो मत। अर्थ का ग्रेविटी यूज करके हमको
मून के ऊपर सेकंड पेंडुलम का लेंथ नहीं मिलने वाला है, तो मून के ऊपर अगर सेकंड पेंडुलम का लेंथ हमको निकालना है तो इधर मून का ग्रेविटी रिप्लेस करना पड़ेगा। इन द सेम वे हियर जुपिटर आल्सो और इवन एनी अदर प्लैनेट आल्सो। तो जिस प्लैनेट के ऊपर हमको सेकंड पेंडुलम का लेंथ चाहिए तो उस प्लैनेट का ग्रेविटी हमको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, तब जाके हमको उसका लेंथ मिलेगा इस तरह से। चलो ठीक है। अभी इसमें देखा जाता है कि सेकंड पेंडुलम का जो ओरिजिनल पीरियड है तो वो 2 सेकेंड्स हुआ करता है, नो डाउट, बिल्कुल। लेकिन अगर सपोज उसके लेंथ में अगर थोड़ा भी अगर फर्क पड़ जाता है, थोड़ा भी अगर डिफरेंस आ जाता है, if suppose a small increment is there in the length of the second pendulum, then its period will change and the counting of time will differ from the original। एक्चुअली क्या है ना कि इसका टाइम 2 सेकेंड्स होता है, उसकी वजह से वो टाइम काउंटिंग करता है, मतलब जैसे वो ऑसिलेट करता रहता है तो उसके हिसाब से वो टाइम काउंट करता है इस तरह से। एक ऑसिलेशन हो गया 2 सेकेंड कंप्लीट हो गया, और एक ऑसिलेशन हो गया 4 सेकेंड कंप्लीट हो गया। ऐसे टाइम काउंटिंग करने के लिए उसको यूज किया जाता है सेकेंड पेंडुलम को। बट अगर अभी इसमें अगर लेंथ में अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाए तो ओरिजिनल पीरियड कितना है उसका, वो 2 है, नो डाउट। लेकिन अगर लेंथ में अगर एक परसेंटेज चेंज अगर आ जाए, so suppose that the percentage change in length is going to be suppose delta L upon L into 100। ओके, तो उसके लेंथ में अगर सपोज डेल्टा L इतना चेंज अगर हो गया, इंक्रीमेंट हो गया या डिक्रीज भी हो सकता है, तो उस केस में परसेंटेज चेंज कितना आएगा उसके लेंथ में, ये आएगा डेल्टा L अपॉन L into 100, no doubt। But now if we just see this concept here, if length increases by p%, then t increases actually by half of p%, right? And hence we can be sure that the new period of the second pendulum here, since its length is increased, its period will get changed, and a new period in this case will be obtained to be simply t dash, which is going to be t plus half of percentage change in length। ये जो है, ये जैसे हम यहाँ पे बोला था कि half of percentage change in the length। So what is the percentage change in the length? It is delta L by L into 100, करेक्ट है। so उसकी वजह से यहाँ पे जो परसेंटेज चेंज जो आएगा t के अंदर, तो उसको हम लिख सकते हैं डेल्टा t अपॉन t into 100। this is the percentage change in time period, which will be going to be equal to half of the percentage change in the length, that means delta L upon L into 100, and hence we can just simplify this and get that delta। अच्छा, ये 100 अगर कैंसिल कर दो सीधा तो हमको मिलेगा डेल्टा t, which is actually going to be equal to half of delta L upon L into capital T। And as we know that for seconds pendulum, this capital T is nothing but 2 seconds, right? And hence we can get the small change in the time period will be actually equal to half of delta L upon L into T। T मतलब 2 seconds, जो कि seconds pendulum का होता है। और अभी यहाँ पे जो 2 है वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा small change in the time period will be actually delta L upon L only। एंड उससे भी आगे जाके ये तो चलो एक सेकंड के अंदर, मतलब 2 सेकंड के अंदर उसका जो टाइम फ्रैक्शन है इतना आ गया, ठीक है। ये जो इंक्रीमेंट है वो 2 सेकंड में होने वाला है, लेकिन 1 सेकंड में कितना होगा, और उससे भी आगे जाके जो पूरे एक दिन में कितना होगा वो अगर हमको निकालना है तो वो भी हम निकाल सकते हैं आराम से। सो डेल्टा टी पर सेकेंड, ठीक है, तो डेल्टा टी पर सेकेंड कितना आएगा, तो वो इसका आधा, क्योंकि ये 2 सेकेंड के अंदर का है तो इसलिए उसका आधा करेंगे तो हमको मिलेगा हाफ ऑफ डेल्टा एल बाय एल। एंड देन इफ यू मल्टीप्लाई दिस बाय 86400, that is the number of seconds in the day, so you can say that the delta t per day, मतलब एक दिन भर के अंदर कितना इंक्रीमेंट होगा या चेंज आएगा टाइम के अंदर, तो वो आएगा 1/2 इंटू डेल्टा एल बाय एल इंटू this 86400। if you just cancel this out, then we can just get it as 43200, and we can be sure that the increment in the time
or the clock based on seconds pendulum will lag or lead behind or ahead of the time by this factor, by this quantity, that is delta t per day will actually be equal to delta L upon L into 43200. ये डायरेक्ट रिजल्ट है, याद रखो ठीक से इसको. So delta L upon L is nothing but the fractional increment in the length. Okay, so you can consider this as a fractional increment in the length, and if we just multiply it by this 43200, then we can get just the increment per day by the clock. मतलब एक दिन भर के अंदर ये जो क्लॉक है वो कितना आगे या पीछे जाएगा, तो ये हमको इसमें से मिल जाएगा आराम से. ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द कंसेप्ट व्हिच इज बेस्ड ऑन सेकंड्स पेंडुलम. रिमेंबर. Next is again, okay, this time period of a seconds pendulum also depends on the gravity inversely. ये हमको आज के लेक्चर में बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करना है. देखो ठीक से, we already seen that the time period of a any pendulum actually depends on the gravity, the square root of gravity, and that is also inversely. So what happens here is the factors which are affecting gravity will also affect the time period of seconds pendulum or simple pendulum. Remember, जितने भी factors gravity को affect करते हैं तो उनसे ये सेकंड टाइम पीरियड ऑफ सेकंड सिंपल पेंडुलम के ऊपर परिणाम होगा जरूर. अभी जैसे हम पता है हमको कि ग्रेविटी जो है वो कौन से फैक्टर्स के द्वारा अफेक्ट होता है. तो ग्रेविटी इज अफेक्टेड बाय हाइट, बराबर है. दूसरा है डेप्थ, डेप्थ की वजह से हाइट चेंज, ग्रेविटी चेंज होता है. तीसरा क्या है, रोटेशन ऑफ अर्थ, करेक्ट है, रोटेशन ऑफ अर्थ. चौथा है planet. If you move from one planet to another planet, then also gravity changes. Even if suppose we falling or rising lifts, that is frame of reference, ठीक है, और accelerated car, okay, car or any vehicle, ठीक है. तो ये सारे इफेक्ट्स है, ये सारे जो, ये इवन लिक्विड ऑल्सो और फ्लूइड, वी कैन से फ्लूइड के अंदर अगर आप डाल देंगे तो भी ग्रेविटी चेंज होता है. सो ये सारी चीजें जो है वो ग्रेविटी को अफेक्ट करने वाली चीजें हैं. तो अभी हम देखेंगे कि हर एक चीज का क्या क्या इफेक्ट होता है ये ग्रेविटी के ऊपर, और उसकी वजह से इनडायरेक्टली सिंपल पेंडुलम के पीरियड के ऊपर. सबसे पहली बात हम डिस्कस करेंगे वो है ग्रेविटी का जीरो बनना. ठीक है, जहां पे ग्रेविटी जीरो बनता है तो टाइम पीरियड ऑब्वियसली इंफिनिटी बनेगा. ये तो हम समझ सकते हैं आराम से. इफ यू पुट दिस g इक्वल टू 0 हियर, then 1 upon 0 becomes infinity, and that's why we can say that this period of simple pendulum will actually become infinity when gravity will become 0. अभी ग्रेविटी कभी कभी 0 बनता है तो उसका लिस्ट हमारे पास है ऑलरेडी. एक तो सेंटर ऑफ अर्थ पे, करेक्ट है ना, सेंटर ऑफ अर्थ, ये तुमको पता होगा, अर्थ के सेंटर पे, क्योंकि हमको पता है कि जीडी के लिए फॉर्मूला क्या है, मतलब ग्रेविटी एट द डेप्थ d बिलो द अर्थ सरफेस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है g into 1 minus d upon r, करेक्ट है. So if we reach at the center of earth, then we can get that this d will become equal to r, and if you put this d equal to r here, then we can get this gd to be simply equal to g into 1 minus r upon r, and r is cancelled and 1 minus 1 becomes 0, and hence we can get that at the center of earth the gravity is going to be 0, and that's why at the center of earth the simple pendulum vibrates with the infinite period. तो उसका जो पीरियड है वो इंफिनिटी बनता है. We can understand here. अब देखो पीरियड इंफिनिटी बनने का मतलब क्या है. देखो सपोज ये पेंडुलम है, इसको अगर सपोज हम थोड़ा स्ट्रेच करके इधर लेके जाते हैं तो इस पोजीशन में वो रुक गया. अभी अगर उसको छोड़ देंगे और अगर वो ऑसिलेट करेगा ही नहीं, अगर नीचे जाएगा ही नहीं, तो उसको हम बोलेंगे इट विल कंप्लीट वन ऑसिलेशन आफ्टर इनफाइनाइट टाइम. That means its period becomes infinity. तो पीरियड इंफिनिटी बनने का मतलब क्या है, ऑसिलेशन ही बंद हो गए, it will not oscillate at all. That means period is infinite. Remember. So that means the simple pendulum will not oscillate if it is taken at the center of earth.
तो दूसरा जो केस है जहां पे ग्रेविटी जीरो बनता है तो वो है स्पेस, ठीक है नहीं, स्पेस के अंदर जहां पे सचमुच ग्रेविटी जीरो है, ठीक है। ग्रेविटी जो है वो अगर हम सपोज किसी भी प्लेनेट से अगर नजदीक नहीं है, दूर चले गए, सभी प्लेनेट से दूर चले गए, जिसको इंटरस्टेलर स्पेस कहा जाता है, तो वहां पे अगर चले जाएंगे तो वहां पे फिर से एक बार ग्रेविटी जीरो है और उसकी वजह से सिंपल पेंडुलम का पीरियड कितना बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा। तीसरा केस जहां पे ग्रेविटी जीरो बनता है वो ये है, it happens in the orbiting satellite. You have seen it in the gravitation that whenever the astronaut is sitting in the orbiting satellite, then also the gravity becomes zero. Correct है? तो यहाँ पे orbiting satellite के अंदर क्या होता है? The gravitational force acting on the astronaut is just balanced by the centrifugal force acting on it, and that's why in that case gravity becomes apparently zero. It's not actually zero, but it becomes apparently zero, and that's why this period of simple pendulum will become infinite in this case also. And चौथा केस जो है जहाँ पे ग्रेविटी जीरो बनता है तो वो है फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट। रिमेंबर, फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट, जब ये लिफ्ट जो है वो फ्रीली फॉल हो रहा होता है, सो सपोज ये लिफ्ट है और ये लिफ्ट नीचे की तरफ जी इतने एक्सेलरेशन के साथ नीचे जा रहा है, मींस फ्रीली फॉल हो रहा है। सो ऐसे केस में अगर हम यहाँ पे एक पेंडुलम रख देंगे अंदर, तो इस पेंडुलम के ऊपर दो फोर्सेस काम करेंगे, एक तो उसका वेट जो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और दूसरा उसका pseudo force, and pseudo force since it is moving with the acceleration of gravity, so the pseudo force will be exactly equal to the mg only, and hence the net force acting on this pendulum will actually be equal to mg minus mg, and hence it will be zero, and hence the gravity apparently becomes zero here. So pseudo force acting on the pendulum in the upward direction just balances the weight of pendulum here, and that's why in this case the apparent gravity becomes zero, and hence we can say that the pendulum will vibrate with infinite period once again here also. ये देखो ये चार सिचुएशंस है, अगर लिखना है तो लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, जिसमें अर्थ का सॉरी जो ग्रेविटी जो है वो जीरो बनता है, और ग्रेविटी जीरो बनने की वजह से इस केस में क्या होता है, द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम बिकम्स इनफाइनाइट। तो एमसीक्यू में अगर तुमको पूछा गया कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एट द सेंटर ऑफ अर्थ, इट्स इनफाइनाइट। Again, if the what is the period of simple pendulum whenever it is taken in the space, it's infinite. Again, what is the period of simple pendulum if it is taken in a orbiting satellite, it is infinite. And finally, if suppose there is a simple pendulum which is kept in a freely falling lift, then what will be its period of oscillation? Again, it is going to be infinite. Okay, तो ये बिल्कुल बात क्लियर करो, ये चारों सिचुएशंस जहां पे ग्रेविटी जीरो बनता है, तो उन चारों सिचुएशंस के अंदर क्या होगा, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विल बिकम इनफाइनाइट, नो डाउट। चलो ठीक है, अभी हम फर्स्ट फैक्टर डिस्कस करेंगे, हाइट। सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन द ग्रेविटी? वी नो दैट दिस g डैश और g h is actually given by g into r square upon r plus h का होल स्क्वायर, करेक्ट है, ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो यही दिस इज द इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन द ग्रेविटी। जैसे हाइट बढ़ता है तो उसकी वजह से ग्रेविटी का क्या होगा, कम होगा, इट विल जस्ट डिक्रीज, एंड सिंस ग्रेविटी विल डिक्रीज द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विल इंक्रीज। इफ वी हैव दिस value of gh here, then if you want to find out the period of simple pendulum in such a place which is at a height h above the earth's surface, then its period of simple pendulum will be obtained to be th, which is going to be 2 pi root l upon gh, where gh can be replaced by this whole value here. So if you replace it by that, then we get this th to be simply equal to 2 pi into root l upon, यहाँ पे gh के बदले हम डाल देंगे यहाँ पे r square upon r plus h का whole square into g, correct है। And if we just simplify this further, then we can get this simplified as, तो ये th को हम लिख सकते हैं इस तरह से 2 pi into, ये जो है उल्टा कर देंगे इसको, तो वो बन जाएगा सिंपली r plus h का होल स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर into l by g, करेक्ट है।
and if we take this r plus h whole square upon r square out, because it is there in the square root sign, so square root or square cancel ho jayega, and we can get that the period of simple pendulum which is kept at h height above the earth surface to be given by this 2 pi into root L by G into, here it will be simply r plus h upon r, square root और square cancel हो गया और ये बाहर आ गया. So we can say clearly that this th is actually going to be r plus h upon r into t, where t is the original period which is given by this equation here. तो अगर सरफेस ऑफ अर्थ पे अगर पीरियड इतना है t है, तो उसके कंपैरिजन में h इतने हाइट पे पीरियड कितना होगा उस पेंडुलम का, इस फॉर्मूला से हमको निकालना पड़ेगा. So it will be r plus h upon r times of original period, that is t here, because we have replaced this whole thing by t here, and that's why we get that the period increases by the factor of r plus h upon r in this way. तो ये अच्छी तरह से याद रखो. This is the effect of gravity on the period of simple pendulum. Now we can also see the effect of this gravity for the very small values of gravity height का वैल्यू r plus h जो है वो अगर nearly r के बराबर है, means it is very small enough, in that case we have the approximation of this formula, that is gh is equal to g into 1 minus 2h upon r. If you remember, in gravitation we have this formula also there. अभी इस फॉर्मूला को, ये फॉर्मूला का जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि इसका परसेंटेज में बहुत अच्छी तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको, क्योंकि देखो gh कैन बी रिटन टू बी इक्वल टू g माइनस 2h by r into g, करेक्ट है. तो अभी इसको हम लिख सकते हैं आराम से कि gh इज एक्चुअली गोइंग टू बी g माइनस, अब यहाँ पे 2h by r जो है इसको अगर परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है, we can multiply it by 100 and get it as 2h by r into 100, ये बन गया परसेंटेज में उसको, ठीक है. तो दिस मच इज द परसेंटेज, and this percent will be, there is a decrease, that means we can say that g decreases by 2h by r into 100%, ये बोल सकते हैं ऐसे. तो अगर g इतने परसेंट से डिक्रीज होता है तो t का क्या होगा, ये देखो यहाँ पे t और g के बीच में रूट का रिलेशनशिप है. We can say that this t is inversely proportional to root of g. So whatever is the percentage change in g will be made half, and that will be the percentage change in t. So we can say that delta t upon t must actually be equal to minus half of delta g upon g. ये बात आई समझ में ठीक से, क्योंकि स्क्वायर रूट है ना, आखिर स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, रेज टू हाफ होता है. तो since there is raised to half, we can say that the percentage change in period will actually be half of minus half of. अब ये माइनस साइन क्या डिनोट करता है, if g is increased t will decrease, if g decreases t increases, इतना ही बताता है. So the percentage increase in t will be equal to negative half percentage increase in g. ये इसमें से हमको पता चल रहा है. तो what we can say here at the conclusion, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, अगर g इतने परसेंट से डिक्रीज होता है तो t इंक्रीज होगा कितने परसेंट से, इसके आधे परसेंट से. इसका आधा मतलब कितना, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा h by r into 100, इतने परसेंट से t बढ़ेगा. That means we can write it in symbolic form that t dash, that means new period here, will be actually the original period plus percentage h by r into 100 percentage of t, original t. And even we can just simplify this still further and see that this will be t plus, अब यहाँ पे परसेंट और 100 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा simply h by r into t, that's it. And if we just take this t dash t common here, then again we can get this t common and we'll be left with 1 plus h by r here in this way. So this is also another formula to use when percentage increase or decrease is given. शॉर्ट में समझने जैसी ये बात ये है कि if g increases or decreases by suppose some p%, then the period will increase or decrease accordingly by half p%. ये हमको अच्छी तरह से याद रखना है, बस खत्म. तो
ये second thing we have to discuss about the effect of gravity, sorry, effect of height on the gravity. Yes, now we'll just discuss about the effect of depth on the gravity. Sorry. Yes, अभी डेप्थ के लिए हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है, जैसा कि हम जानते हैं. If we take a body at a depth d below the earth's surface, then the gravity at that point is given by the formula g into 1 minus d by r into g. Correct है? Again, this formula can also be expressed better way in terms of percentages. So अगर इसको हम percentage के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो हमको लिखने आएगा g minus, sorry, yes, if you open the bracket, then we can get this as g minus d by r into g. Correct है? And hence we can get that gd is actually going to be g minus d by r into 100, and that is in percentage. तो इतना परसेंट g, मतलब यहाँ पे जब हम d इतने डेप्थ नीचे जाते हैं तो g का जो वैल्यू है वो डिक्रीज होता है by what amount? d by r into 100%. Correct है? And since g decreases by d by r into 100%, t will actually increase by half of this percent, मतलब half of d by r into 100, this much of percent. तो इतने परसेंट से t बढ़ेगा, just because we already seen that whenever this g increases or decreases by some percentages, then this t increases or decreases by half of that percentage. तो जितना भी परसेंटेज चेंज g में होगा उसका आधा परसेंटेज चेंज t में होने वाला है, और वो भी उल्टा. अगर g डिक्रीज होगा तो t इंक्रीज होगा, और डेप्थ पे जाने से क्या होता है, g डिक्रीज तो होता है ना, तो g डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, t इंक्रीज होगा. एक्चुअली ये अच्छी तरह समझना है. एंड इफ यू वांट टू टॉक अबाउट द मल्टीपल, तो वो भी कर सकते हैं आराम से. उसके लिए लेकिन यहाँ पे फिर एलसीएम निकालना पड़ेगा. तो ये देखो, if we find out LCM here, then we can just get that GD is equal to ये R minus D upon R into G बनेगा. That means GD जो है वो ग्रेविटी जो है वो कितने टाइम्स बन गया, R minus D upon R टाइम्स बन गया. तो उसकी वजह से फिर पीरियड जो है, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, वो कितने टाइम्स बनेगा, तो वो देख सकते हो. पीरियड एट द डेप्थ D will actually become root of r upon r minus d times of t. समझा कैसे? क्योंकि gd जो है, मतलब g जो है वो अगर इतने परसेंट इतने टाइम्स अगर बनता है तो यहाँ पे वो डाल दो, तो उसकी वजह से क्या होगा, t का जो वैल्यू है तो वो 1 अपॉन रूट ऑफ दिस वैल्यू इतने टाइम्स बनेगा. ठीक है? मींस इन शॉर्ट व्हाट वी आर गोइंग टू से हियर इज, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इफ सी हियर, यहाँ पे इस फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए, इफ g बिकम्स k टाइम्स, अगर g k टाइम्स बनता है तो उसकी वजह से जो पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है t जो है, दैट विल बिकम 1 अपॉन रूट k टाइम्स ऑफ ओरिजिनल पीरियड. दैट मींस न्यू पीरियड t डैश will actually 1 upon root k times of t here, original period here. and यहाँ पे k मतलब क्या है, r minus d upon r है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होगा, अगर g r minus d upon r टाइम्स बढ़ रहा है या बन रहा है तो उसकी वजह से t डैश जो है वो कितना बनेगा, 1 upon root of r minus d upon r टाइम्स, and 1 upon root of r minus d upon r, मतलब ही क्या, मतलब रूट ऑफ r अपॉन r माइनस डी. करेक्ट है? तो इतने टाइम्स वो पीरियड बनेगा, जब क्योंकि ग्रेविटी जो है वो इतने टाइम्स बन रहा है इसलिए. तो इन दिस वे वी कैन कंक्लूड हियर, दिस इज द इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन द ग्रेविटी एंड इनडायरेक्टली ऑन पीरियड. यस, चलो ठीक है. सो द नेक्स्ट इफेक्ट, the next factor affecting gravity is the rotation of earth. Now so gravity also changes due to rotation of earth. जैसा कि हमको पता है लैटिट्यूड के हिसाब से भी ग्रेविटी चेंज होता है,
और उसके अंदर जो फॉर्मूला इन्वॉल्व है वो भी हमको पता है ऑलरेडी, g डैश इज इक्वल टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर into cos square phi, where phi is nothing but the latitude and r is the radius of earth, omega is the angular velocity of earth. So this, because of this, whatever change will take place on g, accordingly the change will take place on this period of simple pendulum. No doubt इतना ही हम इसके अंदर बोल सकते हैं जरूर. Next effect is about the planet. If suppose we move from one planet to other planet, then the gravity of earth is given by gm upon r square, where m is the mass of earth, we can denote it by me, and r is the radius of earth, which we can denote it by re. Yes, now if we, and this gravity is the gravity on earth. Yes, now if we get at the another planet whose gravity is gp, and then its gravity will depend upon its own mass mp and its own radius rp. So it can be found out. And if suppose it is given in terms of the mass of earth and mass of radius of earth, then we can easily find out the gravity of planet in terms of gravity of earth. If suppose we find that the gravity of planet is something like k times to that of the gravity of earth, then what can we conclude? That the period of revolution, period of oscillation of simple pendulum at that planet is actually going to be 1 upon root k times of the period of rotation, period of oscillation of a simple pendulum on the surface of earth here. तो अर्थ पे जितना पीरियड होगा उसका 1 अपॉन रूट के टाइम्स पीरियड बनेगा उस प्लैनेट पे, अगर उस प्लैनेट का ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी के हिसाब से k टाइम्स ज्यादा है तो. ये सिंपल सी बात है, ये हम समझ सकते हैं आराम से. The next effect is about the planet. Sorry, what was it here? Yes, so it will be falling, freely falling lifts. Not freely falling. Freely falling का तो हमने अभी देख लिया. But if suppose a pendulum is kept into a lift, ये pendulum है और ये lift है, ठीक है? And suppose this lift is, for example, falling downwards with an acceleration a, which is other than gravity. ग्रेविटी के अलावा दूसरे किसी एक्सेलरेशन के साथ अगर ये लिफ्ट नीचे गिर रहा है तो इस पेंडुलम के ऊपर एक सीरो फोर्स एक्ट होगा, विच इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन हियर. तो इस पेंडुलम के ऊपर जो सीरो फोर्स एक्ट हो रहा है तो वो रहेगा मास ऑफ पेंडुलम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट के प्रोडक्ट के बराबर. और ऑलरेडी ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज वेट ऑफ द पेंडुलम, इज ऑलरेडी एक्टिंग ऑन द पेंडुलम इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट? सो इफ वी जस्ट हैव दिस equation of motion applied here, then we can say that the net force acting on the pendulum, okay, gravity net force we can say acting on this pendulum will actually be equal to mg minus ma, correct hai? But if this net force has to appear as a net weight, then we can say that this mass into gravity, apparent gravity will be there. तो यहाँ पे अगर ये जो net force है वो उसको अगर हमने apparent weight अगर बोल दिया, apparent weight उसको हम बोल सकते हैं, तो apparent weight will be equal to actual weight minus pseudo force. तो अगर ये हमने इक्वेट किया तो इससे apparent weight को हम m into g dash लिख सकते हैं, where g dash stands for apparent gravity, and this mg dash will actually be equal to mg minus ma, and if we take m common and cancel it out, then we can get that g dash is going to be equal to g minus a. Here, this is the apparent gravity in case when the lift is falling downwards with an acceleration a here. So in that case, the period of simple pendulum in such a lift can be obtained to be actually equal to 2 pi root L upon g minus a. That's it. So this will be the formula for finding the period of simple pendulum which is vibrating in a lift which is falling downwards with an acceleration a, no doubt. And now, instead of falling downwards, if this lift is accelerating upwards, what will happen in that case then? अगर यही लिफ्ट ऊपर के डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेट हो रहा है a इतने एक्सेलरेशन के साथ, suppose this is a lift and this is the pendulum, and suppose it is accelerating upwards with an acceleration a here, then this pendulum will experience two forces. One is the weight of the pendulum mg, which is in the downward direction,
And in addition to that, the pseudo force will also act on it in the downward direction, which is going to be of the magnitude m into a, where m is the mass of that pendulum and a is the acceleration of this lift here, right? And hence we can say that the net force acting on this pendulum here will be actually mg plus ma. And this net force will act like an apparent weight of the pendulum. And this apparent weight can be expressed in terms of m into apparent gravity, that is g dash. And if we cancel out this m from both sides, then we can just be able to say that this g dash will be equal to g plus a. And this value of g has to be put here in this formula so as to get the period of simple pendulum in that case here. So 2 pi root L by g plus a. Sometimes simply MCQs में इतना ही पूछा जाता है कि अगर ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, तो ऐसे केस में इस पेंडुलम का जो पीरियड है वो बढ़ेगा या कम होगा, बस बढ़ेगा या कम होगा, इतना ही तुमको आंसर करना है. So you can just think carefully and see that this gravity, since the lift is moving upwards, the pseudo force will be acting in the downward direction, and this pseudo force will just add up together with the weight, and because of that the net force will just increase, which will thereby increase the apparent gravity. And since apparent gravity will increase and period depends inversely on the gravity, so what we can say is period will decrease. समझा कैसे? Since gravity increases, period has to decrease. And here in case when the lift is falling downwards with the same acceleration a here, then since gravity will decrease, the period will increase in fact. So ये हमको अच्छी तरह समझना है. तो ये increase decrease का concept समझ में आया ठीक से सबको? Yes. चलो ठीक है. So move further. That is in a car. If we have a car containing a pendulum, yes, अभी लिफ्ट के बदले क्या आने वाला है? कार आने वाला है. चलो ठीक है. So if suppose we have a car and suppose this car is moving in the forward direction, suppose, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये कार मूव कर रहा है ए इतने एक्सेलरेशन के साथ, और यहाँ पे हमने एक पेंडुलम लगा दिया. ये देखो ये पेंडुलम है. तो ऐसे केस में if this car is accelerating in the forward direction, then this pendulum will experience two forces. One is due to the gravity, that is gravitational force, which is acting on it in the downward direction, and at the same time another force will be acting on it due to pseudo force. तो इस एक्सेलरेशन की वजह से pseudo force उसके ऊपर काम करेगा, जो कि उसके मास और इस व्हीकल के एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होगा जरूर. और इन दोनों फोर्सेस के चलते सिचुएशन ऐसा होगा, जो कार के अंदर ये पेंडुलम जो है वो सीधा वर्टिकल नहीं रुकेगा, बल्कि ये पेंडुलम जो है वो इस तरह से टिल्टेड हो जाएगा. उसका जो स्ट्रिंग है एक पर्टिकुलर एंगल पे टिल्ट हो जाएगा. ये वर्टिकल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना के वो रुकेगा इस तरह से. ओके, बिकॉज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज mg which is in the downward direction, and ma, that is pseudo force, which is horizontal here. So in this case here, the net force acting on this pendulum will be along the diagonal obtained by this parallelogram, whose sides are this mg and ma here, and this will be the net force acting on this pendulum here. So इसको हम बोल सकते हैं net force acting on the pendulum, and this net force in magnitude will be given by, जैसा कि हमको पता है वेक्टर्स के अंदर कि रूट ऑफ, क्योंकि दोनों वेक्टर्स जो है वो परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का रिजल्टेंट कितना होता है? रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ बोथ द वेक्टर्स के बराबर होता है. तो अगर हम यूज करेंगे यहाँ पे इसको, तो यहाँ पे मिलेगा हमको mg का होल स्क्वायर प्लस ma का होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, इस तरह से. अभी इसमें अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, एंड दिस f net will act like a apparent weight of the pendulum, which will be acting this way here. अभी वेट जो है वो यहाँ पे इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, मतलब ग्रेविटी भी यहाँ पे इस डायरेक्शन में काम कर रहा है. इट इज एक्टिंग एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल. थीटा इतने एंगल पे वो काम कर रहा है. ठीक है, तो अभी अगर सपोज इस एफ नेट को अगर हम m इंटू जी डैश ऐसा अगर एक्सप्रेस करते हैं, और इसमें से भी अगर m स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, तो स्क्वायर रूट में से बाहर आने के बाद वो m बच जाएगा,
और रूट के अंदर क्या बचेगा, सिंपली g square plus a square, and this m will just get cancelled and we'll be left with this apparent gravity in this case here to be simply equal to root of g square plus a square as a final thing. And this value of apparent gravity has to be put here in this formula for pendulum, simple pendulum, period of simple pendulum, so as to get the period of simple pendulum in this such a case in which the pendulum is kept in a car and this car is moving with an acceleration a in the horizontal direction. So here in this case we can say that this L upon here g has to be replaced by g dash, which is going to be equal to g square plus a square here in this way. Okay, so this will be the formula for period of simple pendulum in such a lift, and equilibrium position of this pendulum will be this much here. अब यहाँ पे equilibrium position जो है pendulum का ये रहने वाला है, और जब वो ऑसिलेट करेगा उसको जब हम थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे तो वो इस तरह से ऑसिलेट होगा, ठीक है, इस तरह से, ऐसे नहीं, यहाँ पे ऑसिलेट नहीं होगा वो, इट विल ऑसिलेट अबाउट दिस मीन पोजीशन हियर, ये उसका मीन पोजीशन बन जाएगा, कभी वो इस तरफ जाएगा, सो इस एक्सट्रीम पोजीशन में जब वो जाएगा तो यहाँ पे आएगा, और जब लेफ्ट एक्सट्रीम पे जाएगा तो यहाँ तक आएगा, तो इन दो पोजीशंस के बीच में वो वाइब्रेट करता रहेगा, क्योंकि उस समय ग्रेविटी जो है वो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, ग्रेविटी ही बदल गया, ग्रेविटी का डायरेक्शन ही बदल गया है, तो इस केस में ग्रेविटी का जो डायरेक्शन है वो थीटा एंगल इंक्लाइंड पे है और उसका मैग्नीट्यूड इतना है, और इसकी वजह से यहाँ पे पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम भी चेंज होगा, एंड इट विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला हियर इन दिस केस। समझा है ठीक से? चलो ठीक है, तो अभी हम देखेंगे द नेक्स्ट कंसेप्ट इज अबाउट द इफेक्ट ऑफ, हाँ अभी इसमें और एक बात इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे कि ये कार जो है वो अभी तो फिलहाल जस्ट एक्सेलरेट हो रहा है कि नहीं, ए इतने एक्सेलरेशन के साथ वो आगे बढ़ रहा है, नो डाउट, but sometimes it may happen that this car will be revolving in a circle. Now just think about that. If suppose this car is just revolving in a circular orbit like this, समझो ये रोड सरफेस है और ये कार है, ओके, ये सपोज कार है यहाँ पे, और इस कार के अंदर हमने पेंडुलम जो रखा है, ये उसके व्हील्स, ओके, ये पेंडुलम है, ठीक है। सो दिस पेंडुलम in this case will experience two forces once again here. One is the weight of this pendulum, that is mg in the downward direction, and the other one is going to be the centrifugal force, which is going to be mv square upon r, or we can say it will be mr omega square, no problem. So this is a centrifugal force which is acting horizontally on the pendulum here, and the net force will be acting in this direction here, which is going to be along the resultant obtained by these two forces here, and because of that these two forces, this string of this pendulum will just slightly tilt, तो वर्टिकल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना के वो स्ट्रिंग रुकेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट हो रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब एफसी के बराबर है, जबकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स उसके ऊपर काम कर रहा है वो mg के बराबर है, और अभी इसका जो नेट फोर्स है तो वो नेट फोर्स एक्चुअली इस डायरेक्शन में रहने वाला है, इन दोनों के पैराग्राम के डायगोनल के अलावा रहने वाला है। If this angle is theta here, then we can say that in this case the net force acting on the pendulum here will be obtained to be simply root of this mg का whole square, yes mg का whole square plus fc का whole square, क्योंकि दोनों फिर भी परपेंडिकुलर तो है ना ऑलरेडी, तो उसकी वजह से यहाँ पे mg और fc दोनों के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट के बराबर ये f net होगा, but this f net again we can express it as mass into apparent gravity, which is g dash here, and if we just express put this formula here, then we can get this m square g square plus fc के बदले हम रख सकते हैं यहाँ पे mv square upon r और उसका होल स्क्वायर, करेक्ट है, and then we can just say
this will be actually if we take m square common and take it outside the square root sign, then it will just become m, and hence we can get this m in the square root. There will be g square plus here it will be v square by r and uska whole square. समझा क्या ठीक से? And in that case, the period of simple pendulum here will actually be equal to, you can say, call it as t dash, which is going to be 2 pi root l upon root of g square as it is plus a square के बदले क्या आने वाला है यहाँ पे, ये देखो v square upon r का whole square ये आने वाला है, and then we will have to simplify this further. तो मतलब हमने इन शॉर्ट क्या किया, इस g के बदले हमने यहाँ पे g डैश डाल दिया, क्योंकि देखो g डैश का वैल्यू क्या मिल रहा है हमको यहाँ पे, g डैश is actually going to be root of g square plus v square upon r का whole square, correct है? And this value of g dash has to be put here in the formula of our pendulum, period of simple pendulum. डिनोमिनेटर में यहाँ पे हमको डालना है उसको, तो इससे हमको जो भी मिलता है that is going to be the formula for period of simple pendulum in such a case. इस केस में ये हमको मिलेगा. Yes. Next is the effect of fluid. Now if we just check this effect of fluid on the that means suppose the pendulum is immersed in a liquid of density rho, and suppose it is vibrated, then it will just oscillate, but with a period which is given by the special formula which we have to derive now. Yes, do you know what force, what additional force acts on the pendulum when it is immersed in liquid? किसी भी चीज को जब हम लिक्विड के अंदर इमर्स करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, कोई फोर्स काम करता है उसके ऊपर अदर देन ग्रेविटी? ये सपोज लिक्विड का सरफेस है and suppose the pendulum is immersed in this liquid here. This is the pendulum. Okay, what will be the force acting on this pendulum? One is the mg, no doubt, that is gravitational force, but at the same time the force Archimedes upthrust. Archimedes principle सुना है ना हमने? तो Archimedes principle ये कहता है कि whenever a body is immersed in a liquid, it just experiences a upthrust which is equal to the weight of liquid displaced by itself. तो मतलब कोई भी बॉडी जब इमर्स किया जाता है लिक्विड के अंदर तो उसके द्वारा डिस्प्लेस किए हुए लिक्विड के वेट के बराबर का लॉस उसके वेट में होता है, मतलब ये अपथ्रस्ट उसके ऊपर उतना काम करता है. सो वी कैन कॉल इट एज अ बियॉन्ड फोर्स, वी कैन कॉल इट एज FB. ओके, FB से उसको डिनोट करेंगे. सो व्हाट विल बी द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पेंडुलम हियर देन? So net force acting on the pendulum here will actually be equal to mg, that means the weight of the pendulum, actual weight of the pendulum, minus beyond force acting on this pendulum, which is denoted by FB. Now here this m can be written as v into rho, where rho is nothing but the density of this pendulum here. Okay, and suppose rho w is going to be the density of water or liquid which is involved here. Okay, so we can just replace this m by v into rho g as it is, and here this FB, which is the beyond force, which is always equal to the weight of liquid displaced by that body. It will be equal to volume of body multiplied by rho density of the liquid multiplied by gravity as it is. And this F net can also be expressed as the m into g dash, where g dash has to be the apparent gravity, and m is again replaced by v into rho here. So we can get that v into rho into g dash is going to be equal to v rho g minus v rho w into g. So that if we just divide this whole thing by v and rho से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो देखो क्या होगा, v rho से डिवाइड किया इधर भी v rho से डिवाइड किया और इधर भी v and rho से डिवाइड किया, जिससे हमको यहाँ पे v रो कैंसिल हो जाएगा, इधर से भी v रो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इधर जो है ना v कैंसिल हो जाएगा, रो विल बी लेफ्ट एज इट इज, राइट? एंड फाइनली वी कैन से दैट दिस g डैश will actually be equal to g minus
here it will be rho w upon rho into G kept as it is, right? So we can say this will be rho w upon rho into G as it is. And if we take this G common from the left side, sorry, right side, then we get this G dash equal to G into 1 minus rho w upon rho, correct? Hai? And this value of G dash has to be put here again for finding the period of simple pendulum in such a liquid of density rho w, sorry. So T dash can be obtained to be simply equal to 2 pi into root of L upon G dash, where G dash is replaced by G into 1 minus rho w upon rho. That's it. So if the pendulum is immersed in a liquid of density rho w and vibrated, then its period of oscillation will become this much. It will be given by this formula here. And even we can also express this formula in terms of the specific gravity or relative density, we can say, because we know that the density of the body upon density of water or liquid or water is also called as the specific gravity, which is denoted by sigma here. So if you just replace it here, then we can get the period of simple pendulum in such a case to be simply 2 pi root L upon G into 1 minus 1 upon sigma, where sigma stands for specific gravity of that material. Yes. So this is the effect of immersing a pendulum into a liquid, no doubt. Now we can just check two more situations in the same lines. If suppose there is a pendulum and suppose it is kept above a plate which is given a charge, suppose positive charge for example, ये समझो positive charge यहाँ पे है और इस पेंडुलम के ऊपर हमने जो है एक नेगेटिव चार्ज डाल दिया. ओके, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डाल दिया. Pendulum is negatively charged, whereas the plate below it is going to be positively charged. So in this case, what will happen here is this: if suppose Q इतना चार्ज हमने इसके ऊपर डाल दिया, जिसकी वजह से और यहाँ पे जो प्लेट जो नीचे रखा हुआ है वो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से there will be a electric field produced in the space around this pendulum here, which is of intensity E given here. So E इतने इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पैदा हो गया. तो ऐसे केस में देखो पेंडुलम के ऊपर दो फोर्सेस काम करेंगे फिर से एक बार. एक तो mg जो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और दूसरा QE जो ऑलरेडी तुमको पता होगा कि whenever a charge is kept in an electric field of intensity E, it experiences a force which is equal to the product of charge and intensity here. So इतना फोर्स इसके ऊपर काम करेगा, नो डाउट. अभी नेट फोर्स जो उसके ऊपर काम करने वाला है तो वो रहेगा F net, which is going to be the sum of both of these forces, sum of this mg and QE, just because they are in the same direction, downward direction. And if we have to express this F net in terms of the apparent gravity, then we can express it as m into g dash, where g dash stands for apparent gravity, and this mg plus QE as it is. And then here this apparent gravity can actually be obtained by just dividing this whole equation by m, divided by m, divided by m, and here also divided by m. So this m will get cancelled, this m will get cancelled, so I have to left with g dash, which is going to be equal to g plus QE by m here in this way. So here the gravity will just increase, and because of that period will decrease, and the new period will be given by the formula 2 pi root L upon G plus QE by m, no doubt. And at the same time, if suppose this pendulum is given a positive charge, on the other hand, suppose the same situation में plate जो है उसको हमने positive charge दिया हुआ है already, and pendulum is also given a positive charge. तो इस pendulum के ऊपर भी अगर हमने positive charge डाल दिया Q इतना, जो E इतने intensity के अंदर आ रहा है, तो ऐसे केस में इस pendulum के ऊपर जो force act होगा तो वो अभी इस केस में अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि द फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज along the electric field, but the force acting on negative charge is always against the field. So therefore the force acting on this pendulum in the upward direction will actually be equal to Q into E, correct है? And it will reduce the value of
mg here in this way. तो ये जो weight है वो weight को कम करने के लिए try करेगा, so that the net force acting on this pendulum here will actually be equal to mg minus qe. And if we want this net force to act as apparent weight, then we have to express it in terms of apparent gravity, that is m into g dash, so that we get this mg dash equal to mg minus qe, and g dash will actually be equal to g minus qe by m. If we just divide this whole thing by m, then this will be obtained as a formula for g dash, and this formula for g dash has to be put here, so that we can get this period to be simply equal to 2 pi root L by g minus qe by m, which will just increase the period because gravity is going to get decreased. तो gravity decrease हो रहा है यहाँ पे, तो इसलिए period क्या क्या होगा, increase होगा, सीधी बात बिल्कुल. And even we can also tackle the situations in which the pendulum is kept in a electric field which is horizontal like this. In the same way as we have tackled the situation of pseudo force, याद है? तो pseudo force वाला situation जैसे हमने tackle किया था, सेम वैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला सिचुएशन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, तो वो सिचुएशन भी हम टैकल कर सकते हैं, क्योंकि इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड्स और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई होने वाला है, जो 90 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड रहने वाले हैं, जिसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, जिसकी वजह से ये स्ट्रिंग जो है वो थीटा इतना एंगल करके यहाँ पे रुकेगा, और उसकी वजह से उस रिजल्टेंट को परपेंडिकुलर रहने के लिए, मतलब पैरेलल रहने के लिए पेंडुलम जो है वो इस तरह से बनेगा, और उस केस में जो उसका पीरियड ऑफ वाइब्रेशन होगा तो वो एफ नेट के हिसाब से मिलेगा, और एफ नेट कैसे मिलेगा हमको, रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दिस क्यूई फोर्स, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स. तो ये दोनों, इससे हमको नेट फोर्स मिलेगा, जिसमें से m हटा के हम apparent gravity ढूंढ के निकालेंगे, and that apparent gravity will be put here in this formula here. इन शॉर्ट हमको ये सारे एग्जांपल्स के अंदर क्या करना है, कैसे भी करके apparent gravity ढूंढ के निकालना है, बराबर, apparent gravity ढूंढ के निकालना है. Once you get that, we can just find out the period of simple pendulum easily. So all these are the different aspects which we have to discuss about in this section here. तो ये आज के लेक्चर में हमको करना था. चलो ठीक है. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिकल पेंडुलम या फिजिकल पेंडुलम के बारे में बात करेंगे. यस, सो दैट्स इट फॉर टुडे. Let us stop here. Thank you all of you.